hydrides the third set of third set of compounds of hydrogen, uh, which we had to study. Uh, so there are going to be all the hydrides has been divided into four categories altogether. It's actually three categories only. Fourth one is intermediate one between metallic and non-metallic. So first one is metallic carbides, second one is non-metallic carbide, third one is sorry, the first one is ionic hydrides formed by metals primarily. Uh, group 1, group 2 metals. The second group is covalent hydrides, covalent hydrides, ionic hydrides, covalent hydride, and the third one is metallic hydrides. The fourth category, which is intermediate hydride, this is actually a mix of, I mean, it is something which is in between ionic hydride and covalent hydrides. These are intermediate hydrides or hydrides which has characters of both ionic as well as covalent. Okay. Uh, these are something which has uh, ionic characters as well as covalent characters. So the hydride compounds has uh, significant amount of covalent characters, obviously significant amount of uh, ionic characters as well. मतलब दोनों ही significant होते हैं. दोनों significant कैसे होंगे? 60-40 रेशियो टाइप रहते हैं, 40-60 रेशियो टाइप होता है. लिथियम वाली का जो होता है उसमें भी आयनिक और कोवैलेंट दोनों होते हैं. लिथियम हाइड्राइड के अंदर भी आयनिक कोवैलेंट कैरेक्टर दोनों होते हैं, बट इसमें ज्यादा प्रेडोमिनेटली आयनिक कैरेक्टर मिलता है, मेजरली आयनिक कैरेक्टर मिलता है. कोवैलेंट होता है but to a lesser extent, and therefore we categorize this under lithium hydride under uh, ionic hydrides rather than intermediate hydrides. There are some elements in the periodic table which do not form hydrides. Okay? There are some elements in periodic table which do not form hydrides, and they are termed as uh, I mean uh, those elements are referred as hydrogen gas. ठीक है? So hydrogen gas is the element set of elements in periodic table uh, which do not form hydrides. Is it okay? So we have three types of hydrides: ionic, covalent, and metallic. The first one being ionic hydride. Uh, Ionic hydrides are going to be colorless, stoichiometric crystalline compounds. आयनिक कोई भी कंपाउंड अगर होता है, वेदर हाइड्राइड, कार्बाइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, ऑक्साइड, जो भी आयनिक होगा, हलाइड, all of them are going to be crystalline solids. Crystalline compounds. Crystalline compound का मतलब they are going to form crystals, solid crystals. So आयनिक के साथ ये बेसिक बिहेवियर एसोसिएटेड होता है. All the ionic compounds are crystalline in nature. ठीक है? आयनिक है तो crystalline उसको होना ही होना है. In fact, it is a characteristic. ठीक है?
मतलब अगर कोई चीज क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमको मिल रहा है तो भी we mostly have or the first thing we investigated is does it have ionic bond or not. ठीक है, क्रिस्टलाइन है 70-75% चांसेस रहता है इट इज गोइंग टू बी आयनिक हाइड्रेट. देयर इज वेरी लिटिल चांस, ऐसा नहीं है कि निल चांस है, बट कोवैलेंट होने के चांसेस कम रहते हैं. ठीक है, और वैसे कुछ कोवैलेंट कंपाउंड्स भी हैं जो कि अच्छा आयनिक क्रिस्टल फॉर्म करते हैं सच एज डायमंड. ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर it does form a good crystalline structure, but then that's not very common. There are only few elements which form such type of uh, covalent crystalline solids. ठीक है, covalent crystalline solids. Uh, Number of elements which are going to form such kind of compounds are quite little, quite little. Uh, Another thing is, another key thing is directional bonding. Obviously covalent वाले directional होते हैं, covalent bonding directional bonding होती है. Lack of directional bonding is an indicator of ionic character in the compound. Mostly formed by group 1 and ionic hydrates mostly formed by group 1 and group 2 elements, excluding barium and magnesium and including europium and yttrium. ठीक है, excluding beryllium and magnesium but including europium and yttrium. So metallic compounds, sorry, ionic uh, hydrides कितने form करेंगे? 5 5 10 elements total, right? 5 5 10, sorry, lithium, sodium. हो गया 6 6 12, 6 6 12, 6 plus 6 12. 12 elements are going to form ionic compounds, ionic hydride. Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. यहाँ पे calcium, strontium, barium, and radon. So these are the elements which are going to form plus U and YB. So इन दोनों को compensate कर देता है 12 elements total हमारे form करेंगे ionic hydrides. Group 1 and group 2 metals generally heated with hydrogen forms hydride. Uh, we have this uh, list. लिथियम हाइड्रोजन के साथ हीट किया गया 600 डिग्री सेल्सियस पर हाईएस्ट टू फॉर्म हाइड्राइड. Highest temperature to form hydrate, lithium plus hydrogen 600 degrees Celsius to LiH. Any other group 1 almost 400 mH. Group 2 hydrogen with relatively lower temperature and they form hydrides. लिथियम को जनरली डायरेक्टली हम लोग हाइड्राइड फॉर्म नहीं कराते हैं. D and Mg hydrides are not considered ionic hydride as covalent character dominates, whereas lithium hydride, though has some covalent character, but has ionic character dominance, therefore considered ionic. Uh,
Covalent character among beryllium, magnesium, and lithium hydride varies like this. Beryllium has highest uh, covalent character, followed by magnesium, and least is among lithium hydride. Least is among lithium hydride. ये दोनों को कलर किया हुआ है बिकॉज दे फॉर्म पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर. पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बोला पहले, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर कोवैलेंट लिंकेज का इंडिकेटर होता है. कोवैलेंट लिंकेज का इंडिकेटर होता है. दैट मीन्स एनीथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैव पॉलीमेरिक पॉलीमर फॉर्मेशन टेंडेंसी किसी भी चीज की रहती है. दैट सिंपली मीन्स इट हैज covalent character in it. The dominance of covalent character is this in that particular compound, and obviously that compound will be treated as covalent compound. ठीक है. So अगर कहीं पर भी doesn't matter what compound we are investigating at, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर या पॉलीमेरिक टेंडेंसी किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर आती है, किसी भी एलिमेंट के अंदर आती है, then it is assumed that the covalent character is dominant. I mean, it's a certification kind of thing. If you have polymer forming tendency, that means you have covalent dominance of covalent character. Next thing is we do not form hydride upon heating with hydrogen until temperature is above 1500 degrees Celsius, and therefore we have some other routes to form hydride. इतने टेम्परेचर पर हीट करने के बजाय what we do is we can we conveniently hit BeCl2 with lithium hydride or react beryllium chloride with lithium hydride under ether, and we have BH2 and LiCl, or even we can have this is tert butyl. Okay. This is tert butyl. Carbon CH3 CH3 CH3. This is tertiary butyl. Tertiary butyl, if I am going to, I mean, this is tert butyl, beryllium tert butyl. Beryllium tert butyl को lithium hydride, lithium aluminium hydride, which is one of the most effective reducing agent. It is one of the most effective reducing agent. इसके साथ हम हीट करते हैं and we have beryllium hydride, aluminium chloride and lithium chloride. Beryllium hydride gets formed. ये reaction जो था, this reaction was the first reaction to alternatively prepare beryllium hydride. पहले हम इसी तरीके से प्रिपेयर किया करते थे. It was the first alternate method to prepare beryllium hydride. ठीक है. Happened in 1950, I think. Yeah, 15. First alternate method for europium, yttrium. They are F block metals, but they form ionic hydride as they have divalent cation with half-filled orbital or fully filled orbital. In case of europium, we have half-filled 4f7 orbital, and in yttrium we have fully filled uh,
4F14 orbital. 4F14 orbital. This leading to formation of CaH2 type ionic hydride. और yttrium जो है apart from forming this ionic hydride, it has tendency of forming non-stoichiometric metallic hydride also. Metallic hydride के heading के अंदर discuss करेंगे. Anything which has any awkward formula, right? Awkward formula मतलब जहाँ पर 1:1 या 1:2 types atoms का interaction नहीं हो रहा है, they are called non-stoichiometric compounds. So the hydride of yttrium, it does have tendency to form non-stoichiometric hydrides only. ठीक है. Again, non-stoichiometric hydrides is also a non-stoichiometric formation जो होता है. That is again a type of indicator, like या तो metallic चीजें रहेंगी या फिर ionic character उसके अंदर है. आयन बैलेंसिंग, चार्ज बैलेंसिंग की वजह से ये फॉर्म होते हैं. कहीं पर ये +2 में रह रहा होगा, कहीं पर +3 में रह रहा होगा. कुछ YB एटम्स जो है वो +3 में रह रहे होंगे, कुछ YB एटम्स यानी मेजॉरिटी ऑफ YB एटम्स एक्चुअली H2.55 फॉर्म कर रहे हैं. इसका मतलब मेजॉरिटी +3 में रह रहे हैं. देयर आर माइनॉरिटी एलिमेंट्स व्हिच आर इन YB2+1. ठीक है, तभी ये YbH2.55 फॉर्म करेगा. Anyway, the point is अगर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, देन इट हैज टू बी कोवैलेंट कंपाउंड्स कभी भी नॉन स्टोइचियोमेट्रिक फॉर्म नहीं कर पाते हैं. ठीक है, दे कैन नॉट फॉर्म नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड. और अगर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक है, इसका मतलब है कि इट हैज टू बी आइदर आयनिक और मेटालिक. आयनिक इसलिए जनरली चार्ज बैलेंसिंग अलग अलग चार्ज में रहते हैं, तो सम टोटल जो होता है 1 मोल पर, दैट इज व्हाट वी रिप्रेजेंट इन फॉर्मूला. ठीक है, या फिर मेटालिक हो सकता है. मेटालिक में द टेंडेंसी इज लाइक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ही होता है बेसिकली. मतलब मेटालिक बॉन्डिंग इज वन जहां पर हमारा मेटल एटम जो है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपने विसिनिटी में प्लेस करके रखता है. ठीक है, और वो विसिनिटी में प्लेस्ड एटम्स के साथ ये हाइड्रोजन्स हमारे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, और दैट इज हाउ द मेटालिक हाइड्राइड्स आर डिफाइंड. सो YbH255 non-stoichiometric यानी yttrium apart from forming stoichiometric ionic hydrides, it also forms non-stoichiometric metallic hydrides. ठीक है, so in addition to metallic ionic stoichiometric hydride, in addition to this, yeah, yttrium also forms this non-stoichiometric metallic hydride. Also forms. That is YB also forms. Metallic hydride.
next thing is ionic hydrides of group 1 crystallizes into NaCl lattice. Group 2 hydrides take slightly distorted HCP, that is orthorhombic PCl type lattice, whereas MgH2 showing polymeric covalent character displays rutile type structure. MgH2 rutile type structure. अब ये स्ट्रक्चर NaCl स्ट्रक्चर क्या होता है, HCP स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट इज समथिंग जो हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ पाएंगे या देख पाएंगे. और NaCl 4:4 होता है. इन शॉर्ट अगर हम लोग देखना है तो NaCl का मैं भी बता देता हूँ आप लोग को. कुछ इस तरह का रहता है स्ट्रक्चर, क्यूबिक तो रहेगा ही. The chlorine ions are at the corner of the cube. All the chlorine ions are placed at the corners of the cube. Apart from that, they are also placed at center of each faces. ठीक है. So they are placed here. टोटल कितने हो जाएंगे? अब इसमें ये होता है लाइक ये वाले सारे एटम्स जो होते हैं जो फेस के भी मिडिल में है वो एक्चुअली दो अलग अलग क्यूब के साथ कंट्रीब्यूटेड होते हैं. तो पर क्यूब इनका कंट्रीब्यूशन हाफ रहता है और ये वाले जो होते हैं कॉर्नर पे ये 8 डिफरेंट क्यूब्स के साथ कंट्रीब्यूटेड होंगे. ये वाला इसके बाजू वाला लेफ्ट साइड, इसके इधर बाजू वाले के साथ भी और इसके बाजू वाले के साथ भी ये होगा. तो 4 हो गया नीचे वाले प्लेन में और 4 इसके ऊपर वाले प्लेन के साथ भी ये कंट्रीब्यूटेड होएगा. तो टोटल कितने के साथ कंट्रीब्यूटेड होएगा? 8 के साथ. तो किसी भी एक क्यूब में इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1. ठीक है. सिमिलरली बाकी सारे कॉर्नर के जो है एक क्यूब में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8. और टोटल कितने हैं कॉर्नर्स? 8 कॉर्नर्स हैं. सो देयरफॉर सारे कॉर्नर्स का मिला करके इस एक यूनिट सेल में इस स्ट्रक्चर के अंदर में कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा मुझे? एक क्लोरीन आयन का. ठीक है. सिमिलरली ये
6 फेसेस है मेरे पास, सबका कंट्रीब्यूशन हाफ हाफ रह रहा है इस सेल को, तो 3 इज कमिंग फ्रॉम दीज दिस थिंग फेस सेंटर्स, ठीक है। अब सोडियम जो होता है दैट इज प्लेस्ड इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएटेड बाय ए 2 3 और ये 4, ठीक है। सो इट इज लाइक दिस, right, forming a good structure, but I failed. No worries, representative बना दिया है। This is a tetrahedral structure. This is a tetrahedral structure और इसके सेंटर में यहाँ पर ये सोडियम एटम बैठा होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, डायगोनल के अलोंग अगर देखें, यहाँ से यहाँ अगर डायगोनल मैच कर ये करते हैं और हम बनाते हैं, सो देयर आर गोइंग टू बी 4 डायगोनल्स, ठीक है, एंड टोटल 8 पोजीशंस रहेंगे, ठीक है। डायगोनल बॉडी सेंटर से अगर देखेंगे तो एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ एक डायगोनल से, सिमिलरली इस दोनों पॉइंट को कंटेन करने वाले डायगोनल से दूसरा वाला बनेगा ऊपर और नीचे, ठीक है। टोटल 8 पोजीशंस बनेंगे, आई बिलीव विजुअलाइज हो पा रही होगी। और इसमें ये वाला ऑक्यूपाई रहता है और इसके जस्ट नीचे वाला, जस्ट बाजू वाला और इस साइड में जस्ट बाजू वाला, ठीक है, ये सारे अनऑक्यूपाइड रहेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट फिलिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट फिलिंग अप ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये अगर है तो फिर एक ये रहेगा, ठीक है, और ऊपर वाला खाली रहेगा, नीचे वाला भरा हुआ रहेगा, ठीक है। सो इट इज लाइक अल्टरनेट, टोटल 8 हमारे पास डायगोनल्स होंगे, 8 में से 4 पोजीशंस खाली रहेंगे और 4 पोजीशंस भरे रहेंगे, दैट इज हाउ इट हैपेंस। इसके विसिनिटी में सारे जो होंगे पोजीशंस दे आर गोइंग टू बी अनऑक्यूपाइड। इसके विसिनिटी में कितने रहेंगे, इस सेल के लिए अगर हम देखेंगे तो ये ऊपर पोर्शन में है, ऊपर पोर्शन में एक ये रहेगा विसिनिटी में और एक ये रहेगा इस साइड वाला जो नीचे क्रॉस डायगोनल आ रहा है और इधर से इधर जा रहा है, ये पोजीशन और ये पोजीशन जो रहेगा इसकी विसिनिटी वाला रहेगा, तो दिस विल बी डिस्कार्डेड। और तीसरे डायरेक्शन में ये रहेगा तो ये एक नहीं रहेगा। अब ये खाली है तो इसके जस्ट नीचे वाला क्या होगा, भरा हुआ रहेगा, प्लस इसके जस्ट बाजू वाला भी भरा रहेगा, इज इट ओके। इसके नीचे वाला भरा रहेगा, इसके बाजू वाला भरा रहेगा, तो ये एक भर जाएगा, ये एक भर जाएगा और नीचे वाले में एक यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा। ये वाला डायगोनल में यहाँ पर रहेगा, ये जो है इस डायगोनल का पार्ट रहेगा और इस डायगोनल का पार्ट ये वाला रहेगा। सो एक ये डायगोनल पर 2 रहेंगे, नहीं ये डायगोनल पे नहीं रहेंगे, ये डायगोनल पे एक रहेगा और दूसरा इस डायगोनल पे है, तीसरा इस डायगोनल पे है और चौथा इस डायगोनल पे, ठीक है। सारे डायगोनल्स पे एक भरे रहेंगे, एक खाली रहेंगे। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट टेट्रा फिलिंग अप ऑफ alternate tetrahedral void and this is NaCl structure, ठीक है, this is NaCl structure। तो बाकी सारे जो होते हैं मतलब metallic group 1 metallic hydride they are going to form NaCl lattice which is of this nature, filling up of alternate tetrahedral voids। अच्छा, इसका ये भी कैरेक्टर होता है कि अगर एक यूनिट सेल है तो इसमें मैंने बोला 4 क्लोरीन एटम्स है और ऑब्वियसली 4 सोडियम एटम भी हो जाते हैं, 1 2 3 4 रहेंगे। तो एक्चुअल इस सेल का फॉर्मूला क्या रहेगा, Na4Cl4, ठीक है।
आयनिक कंपाउंड में इस पर्टिकुलर NaCl के एक सेल का फॉर्मूला होता है Na4Cl, बट हम लोग इसको समराइज करके आई मीन वोर को हटा के कॉमन है इसलिए हटा देते हैं एंड वी जनरली प्रोनाउंस इट्स फॉर्मूला एज NaCl. ठीक है, एक्चुअल आयनिक फॉर्मूला इसका क्या होता है Na4Cl4 ना. ठीक है, Na4Cl4, however we pronounce it as NaCl. Similarly, चूंकि ये सारे ग्रुप 1 हाइड्राइड्स जो हैं दे आर गोइंग टू फॉर्म NaCl लैटिस. ठीक है ना, तो आयनिक हाइड्राइड्स कैसे होंगे, इनका फॉर्मूला क्या होगा, सेल फॉर्मूला, यूनिट सेल फॉर्मूला बेसिकली इसको बोलते हैं. दैट विल आल्सो follow the NaCl pattern only, and they will have like instead of NaH it is going to be Na4H4, right? Am I making sense? बाकियों का जो है ऑर्थोरोम्बिक डिस्टॉर्टेड ZCP और MgH2 का तो खैर, बट ग्रुप 2 वाले का जो है ये HCP वाला, ये वहाँ पे HCP जब पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चरिंग कैसी होती है तो फिर वेलकम टू रियलाइज एंड उससे आप फॉर्मूले वगैरह डिड्यूस कर सकते हैं. ये सिंपल था, आई एक्सप्लेन्ड इट. ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है. इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग रहती है. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोन रहता है उसके टेट्राहेड्रल वॉइड्स में डले रहते हैं. सो बट वो स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल दिखाऊंगा तो और वो अभी मुश्किल रहेगा. आई विल एक्सप्लेन दैट इन सॉलिड स्टेट. सो next thing is ionic hydride generally have high melting point. Uh, Still, all ionic hydrides of group 1 and group 2 decomposes on heating before they melt, except LiH, which melts at 691 degrees Celsius and conduct electricity in molten state and liberates H2 at anode, confirming presence of H minus. तो बेसिकली ये है कि अपार्ट फ्रॉम लिथियम हाइड्राइड बाकी सारे जो हैं दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्वाइट हाई मेल्टिंग पॉइंट. तो ये सारे डिकम्पोज कर जाते हैं अपॉन हीटिंग. लिथियम हाइड्राइड है जो कि मोल्टेन स्टेट में मेल्ट करता है बिफोर डिकम्पोजिंग. ठीक है, बाकी सारे क्या है, दे आर गोइंग टू डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग. सो उनका मेल्टिंग नहीं होता है, दे डायरेक्टली डिकम्पोज. इज इट ओके? हीट करते रहेंगे, हीट करेंगे एंड दे आर गोइंग टू डिकम्पोज क्योंकि उनकी मेल्टिंग पॉइंट डिकम्पोजिशन पॉइंट या डिकम्पोजिशन टेम्परेचर से ज़्यादा है. Next thing is density of ionic hydrides are generally greater than that of the metal from which they are formed, which is explained by H minus ion occupying holes in the metal lattice without distorting the initial metallic character. ठीक है, what this means is metal atoms अगर जैसे यहाँ पर तो क्लोरीन नॉन मेटल का बेस स्ट्रक्चर था, वैसे मेटल एटम का भी बेस स्ट्रक्चर बन सकता है. देयर आर मेनी आयनिक सॉलिड्स जहाँ पे मेटल एटम कॉर्नर पे रहेंगे. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे और वहाँ पे अनायंस इम्बेडेड रहेंगे. ठीक है, सो metal atoms are at corner forming the structure and hydrides are going to occupy these tetrahedral voids, internal voids. ठीक है, ये internal voids को
ऑक्यूपाई करने लगा है हाइड्रोजन, तो इस सिनेरियो में द डेंसिटी ऑफ द सिस्टम और द डेंसिटी ऑफ द सेल विल इंक्रीज। ठीक है, अगर मतलब किसी एटम के आने की वजह से ये फिगर जो है नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ मेटल ये चेंज हो जाता, यानी इंक्रीज हो जाता पैरामीटर, वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी बढ़ जाती, तो प्रोबेबली डेंसिटी मैनेज हो जाता। ठीक है, मास ऐड हुआ, वॉल्यूम भी बढ़ गया, डेंसिटी मे और मे नॉट चेंज। बट अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है और सिर्फ इसके अंदर आकर के एटम एंटर कर जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा एटम obviously in form of ions, so that is always going to increase the mass, and in all such scenario the density of the solid is going to definitely increase. That is what being told over here. uh, आयनिक हाइड्राइड्स का डेंसिटी हमेशा उनके नॉर्मल मेटल से, जिस मेटल से वो बना हुआ होता है उससे ज़्यादा रहता है, just because hydrogen ion are occupying the holes in the metal lattice without distorting the initial metallic lattice. Second thing is thermal stability order. Thermal stability order जो है that is almost indirectly proportional to reactivity or inversely proportional to reactivity order है. Next one is ionic hydrides are powerful reducing agents. That's very much true. Lithium aluminium hydride और ये मेटालिक हाइड्राइड तो डायरेक्टली सॉरी आयनिक हाइड्राइड्स को डायरेक्टली ले लिया है। इसके कोवैलेंट कम ये जो होते हैं लाइक कोवैलेंट कम आयनिक कोऑर्डिनेशन एंड आयनिक, ये वाले और भी ज़्यादा ये होते हैं, रिड्यूसिंग टेंडेंसी इनकी और भी अच्छी होती है, सच एज सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, फिर तुम्हारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में जहाँ भी हमको फास्ट और अल्टीमेट रिडक्शन चाहिए होता है, वी ऑलवेज यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बट ये इसकी मतलब इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि दे आर ओनली गोइंग टू वर्क विद पोलर और आयनिक सिस्टम, या तो पोलर रहे सिस्टम या फिर आयनिक रहेगा तभी ये काम कर पाएंगे। ठीक है, नॉन पोलर के साथ काम करना इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, नॉन पोलर के साथ ये काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन्स के साथ ये काम नहीं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रिड्यूस करना होगा तो दे आर नॉट गोइंग टू वर्क। बट वहीं अल्कोहल वगैरह को करना हो, अल्डिहाइड को करना हो, कार्बोक्सिलिक एसिड करना हो, साइनाइड करना हो, जहां भी पोलैरिटी आ जाएगी वहां पर दे आर गोइंग टू बी द चैंपियंस। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्राइड, वी हैव sodium formate being formed, sodium formate or silicon chloride, it's silicon hydride, PbSO4, you have PbS, calcium hydroxide or NaOH, ferroferric oxide and sodium hydride, you have iron and sodium hydroxide. Next thing is ionic hydrides reacts violently with H2O to produce H2. So ionic hydrides, group 1 or group 2 hydrides, they definitely react with water quite violently, uh, highly exothermic and very fast reaction. Highly exothermic and very fast. Okay.
इनका नेचर यही रहता है, इट्स हाईली एक्सोथर्मिक एंड वेरी फास्ट, वेरी फास्ट एंड हाईली एक्सोथर्मिक. With other protein chemicals. They are also going to react with other chemicals like, I mean, जिनके पास ऑक्सीजन देने की टेंडेंसी होती है. LiH plus C2H5OH. We have lithium oxide, ethoxide, lithium ethoxide and hydrogen कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड लिथियम फॉर्मेट फॉर्म कर रहा है. लिथियम हाइड्राइड प्लस SO2 LiS2O4 and H2. Then अमोनिया के साथ we have lithium amide H2 HCl के साथ again H2. So H2 का फॉर्मेशन हाइड्राइड्स रिएक्ट करके मोस्ट ऑफ थिंग्स के साथ हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं. Group 2 hydrides along with lithium hydride react with N2 or to form nitrides. Lithium hydride along with group 2 hydrides can react with nitrogen to form nitrides and liberate hydrogen. ये एक थोड़ा सा यूनिक रिएक्शन होता है, डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप 1. ग्रुप 1 हाइड्राइड नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट या ग्रुप 1 का कोई भी कंपाउंड नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शंस नहीं करता है. ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड के साथ कर सकते हैं बट नाइट्रोजन के साथ उनका रिएक्शन नहीं होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन ionic energy, मतलब ionization energy provided by formation of unipositive cations, and यहाँ पर the amount of energy required to form nitride ion, that is mismatch, and therefore this does not happen. सेकेंड ग्रुप वाले में ऐसा होता है कि एनर्जी ज़्यादा मिल रही होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड anion formation, electron gain enthalpy लगभग सेम रेंज का रहता है. It happens. लिथियम इसलिए करता है क्योंकि आयनिक साइजेस ब्रिज रिलेशनशिप एक्चुअली होता है, क्रॉस रिलेशनशिप. ये मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप में रहता है. लिथियम इज इन डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम एंड देयरफॉर दिस टेक्स प्लेस. LiH is unreactive at moderate temperature with O2 and Cl2 and hence used in synthesis of other useful hydrides. So lithium hydride is generally unreactive with oxygen chlorine and hence it can be used in preparation of other hydrides. It can be used in preparation of other hydrides. The reactions, some of the reactions are lithium hydride is being reacted with aluminium chloride to form lithium aluminium hydride. PH2 के साथ lithium boron hydride, borohydride. Sodium hydride with boron trimethoxy. Trimethoxyborane. This is called trimethoxyborane. Trimethoxyborane. With sodium hydride, it forms sodium borohydride. This is called sodium borohydride. These two I already have told.
are very good reducing agents. One. And they are not going to have conduction tendency or conducting nature due to absence of any ions pertaining to their uh, this thing, covalent character. We have these points related to that. Methods of preparation of covalent carbides. They mostly react directly with hydrogen. Okay? They directly react with hydrogen uh, at elevated temperatures. In some of the cases जैसे नाइट्रोजन के साथ जनरली हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर यूज करना पड़ता है अमोनिया फॉर्मेशन के टाइम पर water formation it has to be initiated by spark explosion ठीक है बाकी सारे केसेस में मोस्टली ऐसा होता है हाइड्रोजन के साथ यू बर्न देम एज इन हीट देम टू अ हाई एलिवेटेड टेम्परेचर 400 300 से 500 के रेंज में आप हीट कर दें and all of them are going to form their respective hydrides. Okay. A reaction of halide with aluminium, uh, lithium aluminium hydride in dry solvent. सर थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए. Actually, A थोड़ा सा differently लिखना चाहिए था मुझे. First point with डन. okay. Uh, the next set of reactions or the method of preparation of these hydrides is covalent hydrides. We have reaction between different halides, and with lithium aluminium hydride, and it forms covalent hydrides of these non-metals, boron hydride, silicon hydride, and many more. We can form almost all of them. All the halides are going to halides of these non-metals are going to react with lithium aluminum hydride to form this particular the hydrides their hydrides directly. एंड ये मतलब बोरॉन और सिलिकॉन के लिए दिया है बट सारे के सारे नॉन मेटेलिक हाइड्राइड का यही नॉन मेटेलिक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन हम इस फॉर्मेट में कर सकते हैं से कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट कर देंगे दैट इज गोइंग टू फॉर्म मीथेन ठीक है सिमिलरली NCl3 को NCl3 बनता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड उसको अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट कर देते हैं तो अमोनिया बन जाता है ठीक है so for all of them we have some of the other reaction happening and it is going to form uh, non-metallic hydrides treating the appropriate binary compound with acid appropriate binary compound with acids and it is again going to form non-metallic
सोडियम जो है सोडियम का सॉरी मेटल जो है मेटल पार्ट जो रहेगा that is going to react with anion and non-metal part is going to react with cation H plus and it is going to form this type of compound, the hydrates, non-metallic hydrates. Reaction with oxy acids, reaction of oxy acid with sodium borohydride. You react this acid, you have this thing, ASH4 और H2SO4 को अगर हम बोरोहाइड्राइड से करेंगे रिएक्ट तो वी आर गोइंग टू हैव H2S I mean सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड भी NaBH4 के साथ कहीं H2S देगा। इसके अलावा मतलब लगभग सारे ऑक्सी एसिड HNO3 को करते हैं रिड्यूस अगर हम लोग करते हैं बोरोहाइड्राइड या एल्यूमिनियम हाइड्राइड से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। So all of them are going to get converted into hydrides upon being treated with either इसको करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी ये रिएक्शन देंगे। सोडियम बोरोहाइड्राइड अच्छा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे अगर हम तो सॉल्वेंट चेंज कर देते हैं ठीक है यहाँ पर एक्वस डालेंगे तो कहानी उल्टी पुल्टी हो जाएगी दिस हैज टू बी डन ट्रीटेड ऑलवेज इन ड्राई ठीक है और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है एक्वस वाटर के साथ रिस्पॉन्ड करेगा और वाटर के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वाटर को रिड्यूस कर देगा instead of reacting with what it wanted or what it is there to react with it will start reacting with water itself directly ठीक है इसलिए ड्राई ईथर मीडियम में इनका रिएक्शन कराते हैं so that we can have effective reaction being taking place converting one hydride into other hydride through pyrolysis बड़े हाइड्राइड्स हैं तो उनको हीट करके हम छोटे हाइड्राइड्स में ब्रेक कर लेते हैं B4H10 B2H6 अब ऑब्वियसली उसके लिए बड़े हाइड्राइड्स होने चाहिए बड़े अल्केन्स या अल्कीन्स बड़े अल्कीन्स को अगर हम पायरोलिसिस प्रोसेस में डालते हैं तो छोटे अल्कीन्स मिलते हैं सॉरी छोटे अल्कीन्स मिलते हैं और प्लस अल्कीन्स भी मिलते हैं ठीक है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों तरह के कंपाउंड्स मिलते हैं आई थिंक शुरू में मैंने बताया है पायरोलिसिस पर we get a saturated and one unsaturated combination हमेशा then we have silent electric discharge or microwave discharge this produce a long chain of simple hydride a long chain from simple hydride GeH4 का example है this is being passed through a silent electric discharge GeH4 is getting converted into G2H6 G3H8 and finally into G9H20 that's the end product so basically GH4 शुरू में बना लिया हमने जर्मेनियम हाइड्राइड एंड G9H20 जो है वो प्रोग्रेसिवली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से we tend to produce G9H20 directly नहीं फॉर्म होगा the only way to form this is through this electric discharge method and it will be true for others also ये बाकी के जो फॉर्म होने हैं ना मल्टीट्यूड जहाँ पे भी फॉर्मेशन होनी है all of them are going to follow this particular rule. Group 13 hydrides are electron deficient and hence polymeric in nature without any direct bond between group 13 elements. Okay.
ये वाला एक सेकंड, यहाँ पर ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं और मैं समझाता हूँ। बेसिकली होता ये है कि ग्रुप 13 हाइड्राइड्स अगर बन रहे हैं, बोरॉन हाइड्राइड हुआ, एल्यूमिनियम हाइड्राइड हुआ, तो इनका टेंडेंसी जो होता है, दे हैव टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स। एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम, ये सारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से दे जनरली फॉर्म बनाना सेप्ट कंपाउंड्स, जिसमें फ्लिपिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है। सो व्हाट हैपेंस इज बोरॉन एंड बोरॉन रहता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे बोरॉन लिखते हैं, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ रहता है और इसका हाइड्रोजन नीचे की तरफ रहेगा। ये वाला ऑर्बिटल खाली है और ये वाला ऑर्बिटल खाली है। अब ये हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ लेकर के इस तरफ बॉन्डिंग शिफ्ट करता है और साइमल्टेनियसली ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्डिंग इस तरफ शिफ्ट करता है। सो देयर इज अ फ्लिप फ्लॉप ऑफ दिस बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड दिस बोरॉन एंड हाइड्रोजन एंड दिस बोरॉन। सिमिलरली यहाँ पर बोरॉन हाइड्रोजन और यहाँ पर बोरॉन हाइड्रोजन में फ्लिपिंग, ये बॉन्ड यहाँ पर फ्लिप करता रहेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर फ्लिप करता रहेगा। इसकी वजह से होता ये है कि ये दोनों बॉन्ड्स जो होते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड और ये बॉन्ड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड हो जाते हैं। तो इनका साइज जो होगा ये छोटा रहेगा और इनके साइजेस जो होते हैं वो रिलेटिवली बड़े हो जाते हैं, ठीक है। Am I making sense? This is called yes sir. बनाना स्ट्रक्चर या फिर ये ब्रिज बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग और बनाना बॉन्ड्स, ब्रिज बॉन्ड और बनाना बॉन्ड्स, ठीक है। फ्लिपिंग कैरेक्टर रहता है और फ्लिपिंग कैरेक्टर की वजह से ये बोरॉन की भी टेंडेंसी थोड़ी सी डिफर हो जाती है। आइडियल केसेस में ये अगर ये पॉलीमेरिक फॉर्म नहीं रहता है तो ये sp2 रहेगा। तीन बॉन्ड्स हैं, ये वैकेंट ऑर्बिटल है इसलिए ये sp2 रहेगा। बट इस तरह की फ्लिपिंग फ्लॉपिंग जब पॉसिबल होती है ना ब्रिजिंग स्ट्रक्चर, so this boron becomes tetrahedron. What does it become? Tetrahedron. So we are basically talking about, in general, they have this, they are electron deficient and hence they are polymeric in nature. However, when in, I mean, obviously, the another tendency is they are without any direct bond between group 13 elements. ठीक है? Apart from that, दूसरी टेंडेंसी जो इनकी होती है, सो दिस इंटायर थिंग इज वन, यहाँ पर डायरेक्ट बॉन्डिंग बोरॉन बोरॉन के बीच में नहीं है। एंड सेकेंड पार्ट इज जब ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, डायमेरिक पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, देन दे हैव गुड ये लेविस एसिड टेंडेंसी, लेविस एसिड टेंडेंसी, दैट इज एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। यानी सी B2H6 जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जो होगी वो रिलेटिवली काफी कम होती है कंपेयर टू, इसको अगर हम ब्रेक कर दे BH3 में कर देना, तो BH3 has very good electron accepting tendency because of the vacant orbital, the permanently vacant orbital. But B2H6 में the orbitals are not permanently vacant, as orbitals are not permanently vacant, तो flip flop होते रहता है हाइड्रोजन का। एंड you don't have permanent vacancy of orbital, and obviously that will impact the Lewis acid character, that is electron accepting character. Lewis acid मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है ड्यू टू सम रीजन और वहां पर कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रॉन्स अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, देन वी आर putting ourselves into Lewis acid character, accepting pair of lone pair of electrons, Lewis acid character.
uh, access very simple. यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं मोनो मेरिक हैज ये नेविसिस्टिक कैरेक्टर दैन apart from that, most of the non-metallic non-metals they form higher this thing polynuclear hydrides. ठीक है? The examples are we have carbon, nitrogen, phosphorus, arsenic, oxygen, sulfur. All of them form uh, polynuclear hydrides. Polynuclear hydrides मतलब obviously दो atoms of just say ethane के अंदर में दो carbon atoms are joined and then hydrogens are attached on all of them. यहाँ पर this is N2H4 this is hydrogen. हाइड्रोजन में नाइट्रोजन नाइट्रोजन की डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है और बाकी दो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं. दिस इज हाइड्रोजोइक एसिड. हाइड्रोजोइक एसिड इसकी जरूरत आप लोग को ऑर्गेनिक में पड़ेगी. तो कुछ रिएक्शंस होते हैं अल्डिहाइड कीटोन्स के और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो इसके साथ में होते हैं. ठीक है? एंड ये जनरली रिएक्शन के बाद में इट इज गोइंग टू फॉर्म amines या amides. ठीक है? amines या amide there is some nice pattern of shifting which takes place. तो हाइड्रोजोइक एसिड फॉस्फीन फॉस्फोरस का अच्छा नॉर्मल इसका अमोनिया रहता है इसका फॉस्फीन BH3 ASH3 H2O H2S. ठीक है? यहाँ पे अब नॉर्मल वाले जो है वो सारे दिए हुए हैं यानी पॉलीन्यूक्लियर हाइड्राइड जो है वो दिए हुए हैं. तो फॉस्फोरस फॉस्फोरस की लिंकिंग रहती है और यहाँ आर्सेनिक की लिंकिंग रहेगी. तीन आर्सेनिक है बीच में फिलिंग अप रहेगा हाइड्रोजन का H2O2 H2O3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लिंकिंग साइड में हाइड्रोजन H2H2S2 अगेन सेम एज H2O2. अच्छा H2O2 अभी पढ़ाया नहीं है H2O2 पढ़ाना है ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये इस तरह की बॉन्डिंग रहती है. H2S की भी बॉन्डिंग मोर और लेस इसी तरह की रहती है. ये हायर वालों की बॉन्डिंग मुझे एटलीस्ट कभी फिलहाल नहीं ध्यान है बट सब में ऐसा ही नेचर रहता है. स्ट्रक्चर कैसा रहता है another thing. So there is going to be a long chain of this which is going to be there and there will be flanking of hydrogen maybe at the end. This is how it is going to be. ठीक है आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं. लास्ट पॉइंट लिखना था है तो लेट भी is going to be NH3 then H2O which is less acidic than HF.
ओके, ये पीरियड में है, एक ग्रुप वाला सिर्फ लिख लेते हैं इन ग्रुप्स। ग्रुप 1 2 के लिए जनरली ऐसा होता है कि हमारा इन ग्रुप्स फॉर ग्रुप 1 and 2, ग्रुप 2, ग्रुप 13 के लिए भी बोल सकते हैं। कार्बन वाले ग्रुप में भी, हाँ, ग्रुप 14 में भी। What happens is, uh, down the group, basic character increases. और ऐसा इसलिए होता है कि बेसिकली साइज डिसिमिलैरिटी जो होती है ना, वो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम जाएंगे, द साइज डिसिमिलैरिटी बिटवीन हाइड्रोजन and the atom keeps on increasing. The other atom keeps on increasing. Therefore, the bond strength keeps on decreasing. ठीक है? At the same time, what happens is, uh, ये हमारा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो है डाउन द ग्रुप जनरली कम होता है, बट हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, हलाइड, ये दो ग्रुप जो होते हैं ना, इनके सारे एलिमेंट्स लगभग जो होते हैं, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन। ठीक है, तो चूंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसकी वजह से इनकी टेंडेंसी क्या होती है, दे आर गोइंग टू पुल अवे द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन, राइट। तो अगर पुल अवे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो जाता है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द बॉन्ड एनर्जी इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, तो पॉजिटिव आयन H प्लस फॉर्म करने की टेंडेंसी हमारी बढ़ती रहेगी। जैसे HF से ज्यादा एसिडिक HCl, उससे ज्यादा एसिडिक HBr, और सबसे ज्यादा एसिडिक HI। क्यों? क्योंकि आयोडीन और हाइड्रोजन का साइज डिफरेंस ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी कम होगा। आयोडीन का ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। इज इट ओके? ऑन कॉन्ट्रेरी ग्रुप 1 और 2 में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन लेके बैठा रहता है, एंड यहाँ पर भी टेंडेंसी यही होती है कि ऊपर से नीचे जब हम आते हैं, साइज डिफरेंस बढ़ता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। लेकिन अब जब हाइड्रोजन ब्रेक होकर के निकलेगा इन मेटल एटम से, तो एक्चुअली इनका इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर के निकलेगा, निगेटिव आयन के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, पहले निकल रहा था तो किस फॉर्म में निकल रहा था, एसिडिक फॉर्म में निकल रहा था। ग्रुप 14 15 ग्रुप 15 16 एंड 17 में जनरली हाइड्रोजन, स्पेशली 16 एंड 17 में वो हाइड्रोजन ले करके निकल रहा था, तो वहां पर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करते जाएगा डाउन द ग्रुप। यहाँ पर क्या होगा, डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज करता जाएगा। इज इट ओके? Yes, sir. 16 17, एक्चुअली 15 भी है। नहीं, ठीक है, ग्रुप 15 16 एंड 17
uh, down the group, down the group, acidic character. ठीक है? So we'll stop here and we'll